Let's start part 2 of Acts and Regulations under the Crown Rule in India. Indian Council Act of 1892. Background and nationalist protests. English. Early nationalists sought a larger role in their country's governance, leading to protests and appeals to democratic principles. हिंदी. प्रारंभिक राष्ट्रवादी अपने देश की शासन में एक बड़ी भूमिका की मांग करते थे, जिससे प्रदर्शन और लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रति आपत्ति उत्पन्न हुई. Increase in council members. English. The act increased the number of members in the Imperial Legislative Council and Provincial Councils. हिंदी. इस अधिनियम ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई. Indirect selection and official majority. English. Some representatives could be indirectly chosen by Indians, but the official majority remained. हिंदी. कुछ प्रतिष्ठानविद सदस्यों को भारतीयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया जा सकता था, लेकिन आधिकारिक अधिकांश बरकरार रहा. Budgetary rights. English. The councils gained the right to discuss annual budgets, although they couldn't vote on them. हिंदी. परिषदों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ, हालांकि उन्हें उस पर वोट करने का अधिकार नहीं था. Indian Council Act of 1909, Molly-Minto reforms. Objective and impact on nationalists. English. The act aimed to divide moderate nationalists. हिंदी. इस अधिनियम का उद्देश्य मध्यम राष्ट्रवादी विभाजित करना था. Increase in elected members. English. The Molly-Minto reforms increased the number of elected members in the Imperial Legislative Council and Provincial Councils. हिंदी. Molly-Minto सुधारों ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने गए सदस्यों की संख्या बढ़ाई. Indirect election and reserved seats. English. Most elected members were chosen indirectly, and some seats were reserved for landlords and British capitalists in India. हिंदी. अधिकांश चयनित सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया और कुछ सीटें भारत में भूमिधारी और ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए आरक्षित थी. Limited powers and advisory role. English. The reformed councils remained advisory bodies without real power. हिंदी. सुधारित परिषदों को वास्तविक शक्तियों के बिना सलाहकारी निकाय के रूप में बनाए रखा गया. Separate electorate for Muslims. English. It introduced a separate electorate for Muslims. हिंदी. इसने मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन स्थापित किया. Abolition of official majorities. English. Official majorities were abolished in provincial legislatures as advised by Gokhale. हिंदी. प्रांतीय विधानमंडलों में आधिकारिक बहुमतों को खत्म कर दिया गया, जैसा कि गोखले की सलाह दी गई थी. Executive control and powers to council members. English. The reformed legislature lacked control over the executive. Members gained the right to ask questions, move resolutions, and discuss matters of public interest. हिंदी. सुधारित विधायिका को कार्यकारी पर नियंत्रण की कमी थी. सदस्यों को सवाल पूछने, संकल्प प्रस्तुत करने और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार मिला. Government of India Act, 1919, Montagu-Chelmsford reforms. Objective and association of Indians. English. The reforms aimed at increasing the association of Indians in every branch of the Indian administration. हिंदी. सुधारों का उद्देश्य भारतीय प्रशासन के हर क्षेत्र में भारतीयों की सहभागिता को बढ़ाना था. Enlargement of provincial councils. English. Provincial legislative councils were enlarged, with a majority of members to be elected. हिंदी. प्रांतीय विधायिका परिषदें बढ़ाई गई, जिनमें अधिकांश सदस्यों को चुना जाना था. Diachi and classification of subjects. English. The provincial governments were given more powers under Diachi, classifying subjects into reserved and transferred. हिंदी. प्रांत सरकारों को डायकी के तहत अधिक शक्तियां मिली, जिसमें विषयों को सुरक्षित और स्थानांतरित में विभाजित किया गया. Extension of separate electorate. English. The separate electorate was extended to 6 Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans. हिंदी. अलग निर्वाचन स्थानांतरण सिखों, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों तक फैलाया गया. Introduction of bicameralism. English. Bicameralism was introduced at the central level with the Legislative Assembly and the Council of States. हिंदी. केंद्रीय स्तर पर 2 पुनरीक्षित सभाएं शुरू की गई, जिनमें से एक विधायिका सभा और दूसरा स्टेट्स काउंसिल था. Civil Services and Public Service Commission. English. The ICS exam would be held in India, and the Act recommended the establishment of a Federal Public Service Commission. हिंदी. ICS परीक्षा भारत में होगी और एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की सिफारिश की गई थी. Chamber of Princes and Electorate Enlargement. English.
The Chamber of Princes was created as an advisory body and the electorate was enlarged. हिंदी, प्रिंसेस का सभा सलाहकारी निकाय के रूप में बनाई गई थी और निर्वाचकों की संख्या बढ़ा दी गई थी. Government of India Act of 1935. Establishment of All India Federation. English. The Act provided for the establishment of an All India Federation, uniting British Indian provinces and princely states. हिंदी. इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया. Provincial autonomy and replacement of Dyachi. English. The new system of provincial autonomy replaced Dyachi, granting more powers to the provinces. हिंदी. दायकी की जगह प्रांतीय स्वायत्ता का एक नया प्रणाली आई, जिससे प्रांतों को अधिक शक्तियां मिली. Centralization of important subjects. English. The Viceroy gained control over critical subjects like defense and foreign affairs. हिंदी. वायसराय को सुरक्षा और विदेश मामले जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण मिला. Financial control and public service commissions. English. Financial control shifted from the Secretary of State to the Government of India under the Viceroy. Public service commissions were established. हिंदी. वित्तीय नियंत्रण सचिव से वायसराय के तत्वरूप सरकार में हुआ. सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किए गए. Establishment of Reserve Bank of India, RBI. English. The Act provided for the establishment of the Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country. हिंदी. इस अधिनियम ने भारत की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी. Creation of Federal Court and abolition of Council of India. English. The Federal Court was established to interpret the Act and resolve inter-province conflicts. The Council of India, 1858, was abolished. हिंदी. फेडरल कोर्ट की स्थापना अधिनियम की व्याख्या करने और प्रांतों के बीच संघर्षों का समाधान करने के लिए हुई. काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 को समाप्त किया गया. Electorate enlargement and seat reservation. English. The electorate increased from 6.5 million to 30 million, and 30 to 40% of central legislature seats were reserved for ruler nominees. हिंदी. निर्वाचकों की संख्या 6.5 मिलियन से 30 मिलियन बढ़ी और केंद्रीय विधानमंडल की सीटों का 30-40% सुरक्षित किया गया था. Indian Independence Act of 1947. Bases and Mountbatten Plan. English. The act was based on the Mountbatten Plan. हिंदी. यह अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था. Creation of Dominions. English. It provided for the establishment of two independent dominions, India and Pakistan. हिंदी. इसने दो स्वतंत्र डोमिनियंस, भारत और पाकिस्तान, की स्थापना की. Radcliffe Committee and Boundary Commission. English. The Boundary Commission, chaired by Sir Cyril Radcliffe, was formed for demarcating boundaries. हिंदी. सीमाएं तय करने के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन बनाया गया था. Loss of powers. English. The crown ceased to be the source of authority. The Governor General and provincial governors lost extraordinary legislative powers. हिंदी. क्राउन अब अधिकार का स्रोत नहीं था. गवर्नर जनरल और प्रांतीय राज्यपालों ने असाधारित विधायिका शक्तियों को खो दिया. Abolition of Secretary of State's office. English. The office of the Secretary of State was abolished. हिंदी. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय समाप्त किया गया. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.